Water show is ready. Now we need a promo. Something cool, something sharp. Well, I'm sure we'll be having outstanding reviews, solid suggestions, expert advice. You're watching Breaking Ground. I'm Vedika Sood. We start with a crime so chilling that it wasn't just committed, it was broadcast. In Bhopal, a 16-year-old class 10 student was stabbed 27 times in just 30 seconds inside a snooker club. I'm going to say that again. He was stabbed 27 times in 30 seconds inside a snooker club. A calculated entry, a swift, brutal assault, a knife, a dagger, no hesitation, then they fled. But what has shaken the city and of course the country is what happened next. The accused, both minors, allegedly circulated the CCTV footage of the attack themselves. There's no fear, there's no remorse, only a display. A teenage rivalry over a game of pool spirals into a near-fatal violence and then into social media spectacle. This incident raises one chilling question, viewers, for parents, for teachers and the system as a whole. What does it say about the growing audacity of juvenile crime? A quick check of the headlines at noon. After Manishankar Iyer, Udhayanidhi Stalin bats for India Bloc leadership change, pitches for Tamil Nadu. Chief Minister Stalin says he's been setting an example for the country. Delhi police arrest fifth accused in connection with the Congress's shirtless protests at the AI Impact Summit last week. Congress workers sent to 2-day police custody. Prime Minister Modi pens letter to people of Bengal, says give us chance to serve you, promises citizenship for refugees under CAA. Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin stokes huge storm, says ready to face even Modi's father to protect Tamil Nadu's rights. BJP hits out, calls his remark tasteless. DMK Congress's key meet over seat sharing amid power sharing tussle. Sources tell NDTV Congress leader KC Venugopal apprised Tamil Nadu Chief Minister about party expectations in meeting. The big international headline, Mexico's most wanted drug leader killed in military operation as clashes erupt. Cartels torch cars, wreak havoc in Code Red attack. Indian embassy issues advisory for citizens in Mexico. And Rashmika Mandana and Vijay Devrakonda set to get married in Udaipur. Security stepped up for big event as they arrive in the city. News just coming in. Youth Congress President Uday Chib has been summoned by the Delhi police for questioning at the Tilak Marg police station. The Youth Congress's 3-day national executive meeting, which is scheduled for today, has also been postponed, is what we're hearing. This meeting was scheduled to be held at the Maharashtra Southern. Akil joining us live. Akil, share the details you have. The latest being that we have Chib, who's been summoned by the Delhi police in the case. Well, Vedika, if you see, the Delhi police team has intensified the probe which has been going on. Since then, what we have seen that a Delhi police special cell team and a crime branch team which is investigating the case. This very morning, one more individual was arrested from Madhya Pradesh, Gwalior district. And so far, if you see what we are seeing, that the total arrests which have been made by the Delhi police team is 5. And apart from that, what we have also got to learn that there are 4 more individuals who have been detained. And out of those 4 individuals, 2 have been detained from Madhya Pradesh and 2 more have been detained from Uttar Pradesh. So far, if you see the tally, what we have got to learn that there are 5 arrests and 4 more detained. In a fresh development, what we are seeing that right now, the Delhi police team has basically called Indian Youth Congress President Uday Chib and he is basically, he was summoned by the Delhi police team. So it's very likely that in the next few moments, he will be arriving at the Tilak Marg police station. So Delhi police will be questioning him regarding his role and other Congress persons, other youth Congress persons who were part of this shirtless protest at
the AI summit at Bharat Mandapam. So right now, the interrogation of some of those individuals who were earlier arrested by the Delhi police is still going on, and Delhi police is basically trying to look at a very chain that who all those individuals. Akhil, I will have to interrupt you there because there's a live press conference coming. We have to cut across to that. Major General APS Bal now is addressing that press conference. This group was engaged on 17 occasions, and over the period of last 1.5 years, we were able to neutralize all of them. And yesterday was the culmination of this 1.5 year long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफ़ी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफ़ी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रों एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। और यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहाँ पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयाँ भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी बेहतर कार्रवाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, नंबर तो स्पेकुलेशन रहेगा क्योंकि ये जो टेररिस्ट का ग्रुप है काफ़ी मोबाइल होता है, जो आज एक इलाके में दिखता है और 2 दिन के बाद किसी दूसरे इलाके में दिखता है। बट जो सबसे बड़ा ग्रुप था इस 7 टेररिस्ट का, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आने वाले वक्त में कुछ और भी ऑपरेशंस पाइपलाइन में हैं और आपके सामने रिजल्ट जो है वो आपको दिखेगा। सर, देखा गया है कि पाकिस्तान कोशिश करता है जम्मू कश्मीर की युवाओं को बनाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि कमी आई है? देखिए, यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018, 19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, आतंकियों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन आतंकी थे और क्या जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है उसके तहत इसमें भी मदद मिली? उस ऑपरेशन में ओवरग्राउंड वर्कर्स आपने काफी डिटेन किए। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। इसमें अनुसंधान काफ़ी आगे बढ़ गया है और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहाँ से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। All right, so that's a live press conference that you just heard. This was an encounter that took place in a remote area in Kishtwar district of Jammu and Kashmir. Those were the details that were being shared. A terrorist was killed in that encounter. We're now going to cut across live to Home Minister Amit Shah speaking. He is interacting with the drivers of Bharat Taxi. परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या?
वो जो कंपनियां हैं वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा, और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको करना, ये प्राइवेट कंपनियां इस पर जो स्पर्धा थोप देगी गलत प्रकार की, क्योंकि वो तो कमा कर बैठे हैं, तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे, और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हम 3 साल में पहुंचे, तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 करोड़ 75 साल के आजादी में कोऑपरेटिव में जुड़े हैं, भारत टैक्सी 15 करोड़ 1 साल में 2 साल में जोड़ देगी। तो इसको हम सब ने मिलकर मजबूत कराना पड़ेगा। धन्यवाद सर। धारा वल्लभ जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथी प्रतिनिधि के रूप में भी शामिल हैं, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा। अब मैं अनुरोध करूंगा किशन भाई गोविंद भाई पटनी जी से, वो अपनी बात रखें आपके समक्ष। नमस्ते मंत्री श्री, मैं अहमदाबाद गुजरात से एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अभी मैं 10 साल से ऑटो चलाता हूँ अहमदाबाद में। कहाँ रहते हो? मेरे मतदाता। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मंत्री श्री, अभी जो ऑनलाइन हम राइड कर रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं आप पार्टनर हो, तो पार्टनर को जो कुछ समस्या आती है तब हम कॉल सेंटर में बात करते हैं। एक सेकंड मुझे बताओ, उन कंपनियों का शेयर है आपके पास? नहीं है सर। तो कैसे पार्टनर हो गए? सर वही बात लोग पार्टनर बताते हैं। वो पार्टनर नहीं है सर, छलावा कर रहे हैं। सही आपके सर। तो सर भारत टैक्सी हमको बोल रही है सारथी आप मालिक हो, तो सर हमको मालिक का हक कैसे मिलेगा? मैं बताता हूँ। भारत टैक्सी में अभी हम सब छोटा छोटा काम करते हैं, सारथी है। हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर ले। हमने अभी भारत की 5 बड़ी कोऑपरेटिवों को मिलाकर ये खड़ा कर दिया। अब जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहता होगा, कंपलसरी नहीं है, आप बनो ना बनो आप पर निर्भर है। 500 रुपये का अगर आप शेयर लोगे तो आप इसके मालिक हो जाओगे। आप मेरी बात समझ गए? फिर जब भारत टैक्सी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा, तब इसमें कुछ सीटें सारथियों के लिए भी चिन्हित रखी, जैसे अभी भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो वो आपके सारे हितों की चिंता करेगा। अगर भारत टैक्सी सारथियों के पक्ष में कोई नीति नहीं करती है, तो ये तो आपका प्रतिनिधि ना चिल्लाएगा कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, हमारी कंपनी है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। मुझे बताओ भाई, उन कंपनियों के बोर्ड में आपका कोई प्रतिनिधि है? नहीं सर, नहीं सर। यहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आप मालिक हुए या नहीं हुए? यस सर, यस सर। तो यही कंसेप्ट है भाई, आपका कोऑपरेटिव है, आपको चलाना है, मगर इतना रखना मैं आऊं तो कभी चाय पिलाना भाई, बाकी तो क्या है यार, इसमें कंपनी आपका ही है।
मुनाफा भी 20% रिजर्व करेंगे, जिससे कंपनी कोई खराब समय में आए तो हमारी उससे चलती रहे। 80% मुनाफा पर किलोमीटर वापस दे दिया जाए। पहले 3 साल हमें एक एक शहर बढ़ाता जाना है। अभी दिल्ली एनसीआर बढ़ा है, तो अब राजकोट बढ़ाएंगे वो। तो पहले 3 साल हमारा एक्सपांशन में जाएगा। 3 साल के बाद जितना भी मुनाफा होगा 20% कोऑपरेटिव भारत टैक्सी में रहेगा और 80% हमारे सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। आदरणीय मंत्री महोदय जी नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ। और ये जो एबेस्ट कंपनियाँ हैं, इसमें लगभग मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मोटे कमीशन को लेकर के हम 12, 15, 16 घंटे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। तो भारत टैक्सी जो दावा करती है कि ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा, कोई कमीशन नहीं कटेगा, तो ऐसे में भारत टैक्सी ये कब तक रन कर पाएगी? कब तक मतलब हम ड्राइवरों को कहाँ से देगी ये सब जो सुविधाएं दे रही है? देखिए ऐसा है, एक तो बैठ जाइए आप। जी सर। पहले एक बात समझिए, भारत टैक्सी का उद्देश्य कोई कंपनी की तरह बड़ा मुनाफा कमाना नहीं। भारत टैक्सी का उद्देश्य है हमारे सारथी भाइयों को मजबूत करना। अब आपने जो सवाल उठाया कि भारत टैक्सी कहां से चलेगी, चलेगी तो इसी तरह से, परंतु वो इतना होगा जिसका जितना दाल में नमक होता है। ये कंपनियों ने नमक की दाल कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसका हिसाब किताब तो आपके पास में है नहीं। इसका हिसाब किताब आपके पास में रहने वाला है, आपके लोग चलाने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनकी तो तनख्वाह होगी, शेयर नहीं होगा। वो आपकी ओर से पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। शेयर आपके पास है, मालिक आप हो, पॉलिसी आप बनाना है। तो जब आप पॉलिसी बनाओगे तो आपके पक्ष में बनाओगे या विरोध में बनाओगे, बताओ। मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है सबने? जी सर। एक व्यक्ति का, उसके घर पर एक मुर्गी ने एक दिन सोने का अंडा दे दिया, दूसरे दिन भी दिया, तीसरे बड़ा खुश हो गया कि मुर्गी भाई सोने का अंडा दे रही है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो धनी हो गया। फिर एक दिन रात को उसको विचार आया कि ये रोज एक अंडा दे रहे, कितने अंडे अंदर पड़े होंगे, लाओ एक गर्दन काट लेते हैं, सारे अंडे एक ही दिन निकाल देते हैं। तो दूसरे दिन उसने वो करा, एक भी अंडा निकला नहीं। तो हमारी खुद की कंपनी को समझकर कोऑपरेट करना, सहकार करना, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और इतना मानकर चलो कि जैसे गाय का दूध का हम दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते उसका। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? भारत टैक्सी दूध का दोहन करेगी, आपका शोषण नहीं करेगी, इतना निश्चित मानकर चलो। धन्यवाद सर। नरेश कुमार उपाध्याय जी से मैं निवेदन करूंगा, अब वो अपनी बात रखेंगे आपके समक्ष। माननीय नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार उपाध्याय है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 12 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूं। माननीय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारत सरकार और सहकारिता को, जो हमारे लिए भारत टैक्सी लेकर आई है, जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मान्यवर, मेरी दशा तो अभी से बदलना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर बात करें हम पिछले जनवरी की, तो मैंने 20,000 प्लस का जो कमाई भारत टैक्सी में किया है सर। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमें नई गाड़ियों के लिए इसमें लोन भी दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हो गई जब हमें पता चला कि हमारा इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें किस प्रकार हमें उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए भाई, योजना कैसे बनाई है कि एक बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक के भी है,
तो आपको लोन देने में बड़ी दिक्कत आती है या नहीं आती है? वो बैंक ही मॉर्गेज करती है ना। यहाँ भारत टैक्सी आपकी टैक्सी को मॉर्गेज कर लेगी और भारत टैक्सी आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोन दिला देगी। आपका इंश्योरेंस इफ्को टोक्यो का, वो भी भारत टैक्सी ही एजेंट बनाकर आपका इंश्योरेंस ले लेगी, जिसमें मिनिमम प्रीमियम होगा। इस प्रकार के कई प्रावधान हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। शुरुआती कुछ समय आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था बनती है तो बनते बनते समय होते। जैसे एक नया घर लोगे तो शुरुआत में बाथरूम में थोड़ा प्लम्बिंग का प्रॉब्लम होगा, कहीं कलर उखड़ा हुआ होगा, कहीं दरवाजा ढंग से बंद नहीं होता होगा, मगर 1 महीना होते होते आप सब रिपेयर करा दोगे और ये सुचारू रूप से घर में रहना शुरू हो जाता है। इस तरह से टीथिंग प्रॉब्लम, जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को अपनी कंपनी है ऐसा समझकर थोड़ा बड़ा हृदय कर रख कर चलना, तब जाकर ये निश्चित सफल होगा। आपको जरा भी शंका रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। वनराज गढ़वी जी से मैं अनुरोध करूंगा, वो अब अपनी बात महोदय के समक्ष रखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम वनराज गढ़वी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 8 साल से अहमदाबाद में टैक्सी चलाता हूँ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने काम किया है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां, हम जब सुबह से घर से निकलते हैं, अच्छी सोच लेके निकलते हैं कि घर से निकलकर हम जाए, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, घर अच्छा पैसा लेके आएंगे और परिवार का गुजरान करेंगे। लेकिन जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो इतना भारी कमीशन और इतना टैक्स, मतलब ऐसे चार्ज लगाते हैं, हिडन चार्ज लगाते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से कौन से चार्ज लगाए जाते हैं। कभी चार्ज बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी किराया बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जब हम थक के घर जाते हैं शाम को, तब मालूम पड़ता है कुछ नहीं बचा है, हमने तो खाली मेहनत ही की और कुछ बचा नहीं। ना हमारा परिवार का भविष्य होता है, ना किसी का और कुछ होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सर कि भारत टैक्सी हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और क्या क्या सुविधा देगी। पहली बात, भारत टैक्सी में हिडन कुछ नहीं होगा। एक बात समझिए, जो होगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तभी होगा, और 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आएगा। आप मेरी बात ढंग से समझ रहे हैं? जो करेंगे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन भेजकर करेंगे। आपकी मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर क्या होगी, वो बेसलाइन बनाकर जो होगा उसके ऊपर होगा। मतलब आप 1 किलोमीटर का आपका रेट 2 रुपया है, मैं काल्पनिक रूप से 2 रुपया कह रहा हूं, तो जो होगा वो 2 रुपया प्लस मुनाफा उसके ऊपर ही होगा, इसके नीचे कभी नहीं होगा। All right, that's Home Minister Amit Shah speaking with the drivers of Bharat Taxi, which was launched earlier this month, India's first cooperative-led ride-hailing platform after a successful 2-month pilot operation. Remember, it's aimed at providing better earnings, transparency and ownership to drivers, like the Home Minister has just underscored. It has been launched in Delhi, NCR and Gujarat, but like Amit Shah just said, it will also expand to other states within the next 3 years. Our top political focus, fresh turbulence inside the India Bloc. In the latest, DMK is now openly batting for Tamil Nadu Chief Minister Stalin to lead the alliance. Deputy Chief Minister Udhayanidhi said that Stalin has set an example for the rest of the country and that state leaders must spearhead fight against the BJP. This comes close on the heels of Congress veteran Manishankar Iyer suggesting that Rahul Gandhi should step aside from the driving seat of the India Bloc and allow regional leaders to take the lead. Reactions have been swift in West Bengal. Congress State General Secretary Shuman Roy Chaudhary has accused Iyer of angling for a Rajya Sabha berth. Meanwhile, Trinamool Congress has asserted that Mamata Banerjee is the only leader mounting a sustained ideological challenge to the BJP, not just in terms of the India Bloc leadership. MDMK Chief Vaiko has also said that even though he is an ally of the Congress, he backs Pinarayi Vijayan government to return to power in Kerala. The BJP on its part claims this exposes the lack of faith in Rahul Gandhi, senior leader of the party, within his own alliance.
அப்படிப்பட்ட இளைஞரணி தந்த நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் இன்னைக்கு ஆட்சி அரசியல் ரெண்டிலுமே இந்தியாவுக்கே ஒரு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு தலைவராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அரசியல் எடுத்துக்கிட்டா இன்னைக்கு இந்திய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு ஜனநாயக போர நம்முடைய தலைவர் தலைமையில் நடத்தணும்னு இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாநில தலைவர்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. My knowledge and information I got through from many quarters, the ensuing elections, Honorable Mr. Pinarayi Vijayan, under his leadership, the Marxist Party and its allied parties will win the polls. Therefore, the continue after this ensuing elections. This is my information. That is the confidence I have got. को लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए. It is opinion of an individual leader like Mr. Manishankar Iyer. And let us see, even some journalists keep writing on that issue. Even today, there is a write-up that Mamata could be a face like that. There are many views coming out. It shows India Bloc should function with cohesiveness and proper coordination. सेकुलर का जो कंसेप्ट है वो 90s के बाद से ही भारत की जनता ने ठुकरा दिया, और चाहे बाहर से कोई भी कितना सपना देखे कुछ नहीं होने वाला है. कांग्रेस का जो राजनीति है वो पैरासाइट का राजनीति. कांग्रेस शाम ढलने के बाद किसी का दरबार पे पहुंच जाते हैं और खिड़की से ताक कर बोलते हैं कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है. ऐसे चलेगा नहीं. Seen that how alliance partner after alliance partner is showing Rahul Gandhi the mirror. First it was TMC who said Rahul hatao, India alliance bachao. Samajwadi Party also said that. We have seen the manner in which UBTCN has said that. Also after the shirtless, shameless act of Congress Party in the AI summit, all the alliance partners, RJD, Samajwadi Party, they have distanced themselves from Rahul Gandhi and from Congress Party. And now even the old veterans of Congress, they are also saying that they have no confidence in Rahul. Breaking news just coming in. This has to do with the Tirupati Laddu Rao. The top court of India has junked a plea against a probe. The Supreme Court has said let the probe go on strictly on basis of the law. The top court has noted that the investigation is complete and the charge sheet has been filed, and at this stage an administrative inquiry ordered by the government cannot be called as overlapping with the criminal proceedings which led to the charge sheet and supplementary charge sheet. The Chief Justice of India has said we are satisfied that the petitioner in the instant doesn't have a foundational basis. Let both processes continue strictly on the basis of law. Now, the court was hearing a petition filed by BJP leader Subramanian Swamy, who has challenged the formation of a single-member committee appointed in connection with the SIT probe on the issue. In his plea, Swamy has questioned the validity and transparency of constituting a one-member panel to examine the findings of the SIT. He has sought appropriate directions from the Supreme Court regarding the handling of the matter, and that is what the Supreme Court has now observed. I have Nupur joining me live on the story. Nupur, just take us through very briefly what happened inside the top court on this issue today. Well, Vedika, the Supreme Court was in the first instance informed by the Andhra Pradesh government and also the centre that the probe have in fact investigation
investigation is complete and a charge sheet has been filed in the case. And after that, this government's inquiry has been constituted. And that's why there is no overlapping as claimed by Subramaniam Swamy in his petition. Now, the Supreme Court, noting these submissions, said that the claims made by the petitioner, that is Subramaniam Swamy, have no foundational basis, and has said that let the court probe as well as the government ordered inquiry go on as accordance to law, and therefore the top court has refused to entertain this petition moved by Subramaniam Swamy today. All right, Nupur, thanks for joining me live on that developing story. Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin has launched a sharp attack on the BJP-AIA-DMK alliance ahead of the Tamil Nadu state elections. He stated that the Enforcement Directorate, the CBI, and other agencies are being used by the BJP to intimidate political opponents. Our leader has already given a reply to them in Madurai. He further stated that we will not compromise our self-respect even if we lose our lives. We will never compromise on the rights of Tamil Nadu. We will neither fear the ED nor Modi. Not just Modi, we are ready to face even his daddy, is what he said. Meanwhile, the BJP has reacted sharply to it and condemned Udhayanidhi's remarks on Prime Minister Modi. இந்தியாவிலேயே ஒரு இயக்கத்தை எப்படியாவது மிரட்டினா உருட்டலான்னு இடி சிபிஐ இப்படி பல்வேறு அமைப்புகளை வச்சு மிரட்டிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் நேற்று மதுரையில தெளிவா ஒரு பதில் சொன்னாங்க. என்ன வழக்கு தானே போடுவீங்க? திமுக உடன்பிறப்புகள் பார்க்காத வழக்குகளா? மொழி போர்ல ராணுவத்தையே எதிர்த்து நின்ற இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். மிசாவை பார்த்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் உயிரே போனாலும் எங்களுடைய சுயமரியாதையை நாங்க என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகளை என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அதனாலதான் அடிக்கடி நான் சொல்வேன், நாங்க ஈடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம், மோடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம். மோடி இல்ல, மோடியோட டாடி வந்தாலும் நாங்க ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கின்றோம். Stalin is a deputy chief minister. He should know, he should behave in a matured way. And talking like this is not going to serve any purpose. So it says the cheaper mentality, the lowest mentality of the Dravida model DMK, and a person of his stature talking about the Prime Minister. I think he should be more matured enough. Tamil Nadu elections are likely to take place within 2 months. The political statements by the ruling party shows that they are in frustrated mood. Not only that, but they are also attacking personally our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. All right, we're going to cut across live to actor-turned-politician Vijay, who will be addressing the party cadre in Vellore today. These are live visuals that we're bringing to you from Vellore. Huge arrangements have been made, of course, at the venue, given what happened in Karur. For every meeting that he has, there are some guidelines that have also been issued. Vijay hitting the road again, this ahead of the state elections in Tamil Nadu. Elaborate arrangements and strict security protocols have been put in place to ensure smooth and safe event. Let's just dip in to listen into what is happening. Vijay to speak shortly. எங்க ஓட்டு எங்க உரிமை. Should I just be on the... எங்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. எங்க ஓட்டு விசில் சின்னத்துக்கு தான். யாரையும் நம்பி ஏமாற மாட்டோம். எங்க வார்த்தையிலிருந்து மாற மாட்டோம். இது நிஜம். Thank you. ஒரு குட்டி கதையிலிருந்து ஆரம்பிப்போமா? Let me start with a short story. ஒரு பெரிய ஊரு,
ஒரு 4 ரோடு ஜாயிண்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஜங்ஷன். There is a full junction in a town. ஆள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. அங்க It's a சென்டர்ல busy area with lots of people's movement. ஜல்லிக்கட்டு காலை ஒன்று நின்றுட்டு இருக்கு. In the middle, there is a bull, Jallikattu bull, யாருமே ferocious. பக்கத்துல போக முடியல. அந்த இடம் ஒரு Nobody கேஷுவலா could go மாறணும் near it. அப்படின்னா அந்த காளைய அடக்கி That place அமைதியாக்குனா has to become மறுபடியும் ஒரு பேக் டு நார்மல் a casual சிச்சுவேஷனுக்கு அந்த place. இடம் மாறும். That bull ought to be tamed அந்த so that ஊர்ல இருக்கிற the ஒரு place சில can பேருக்கு become மட்டும் normal. தான் அந்த காளை அடங்கும். அவங்க யாருமே அங்க இல்ல. The bull will ஆனா அந்த listen to only a crowdல few இருந்த ஒரு people in சில that பேர் town. ஆல்ரெடி அந்த காளைய அடக்கணங்களோட இருந்த ஒரு சில பேர் எங்களுக்கு இல்லாத A few அனுபவம். people who were already with those tamers in that crowd. நாங்க பார்க்காத காளையா, நாங்க பார்க்காத Kept saying, மாடா, we நாங்க have போய் seen அடக்குறோம்னு so சொல்லிட்டு many உள்ள bulls. போறாங்க. They ஒருத்தராலேயே came அந்த in to காளைய tame the தொடக்கூட bull. முடியல. எல்லாரையும் None அடிச்சு could வீசி touch the தூக்கி bull. போட்டுருச்சு. இப்ப என்னடா The பண்றது bull அப்படின்னு பார்க்கும்போது attacked all of them அந்த and threw them கூட்டத்தை out. விலக்கிட்டு ஒரு சின்ன பையன் Then a little boy cleared all the crowd, ஒரு என்ட்ரி ஒன்னு கொடுக்கறான். made an entry. உங்களுக்கு தெரியும்ல, டேய் எங்களாலே முடியல, You know நீ what எல்லாம் என்னத்த remarks போய் கிழிக்க போற, others would have made. Even எங்களுக்கு we அவ்வளவு couldn't do அனுபவம் anything. What can you இருக்குது, do நாங்களே here? அடிபட்டு ஓரமா படுத்து We have so கிடக்குறோம். much of experience, but we ourselves suffered injuries. காலை கிட்ட போய் அடிபட்டு சாவ போறான். பச்சா Poor boy பையன், அந்த பையன், is இந்த going to get பையன், killed by the bull. அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றது, They ஏளனமா made all பேசுறது, those இப்படி ஒரு comments பக்கம். underestimating him. இன்னொரு பக்கம் பரிதாபப்பட்டு, ஐயோ In another பாவமே, side, some இப்படி தனியா போய் were மாட்டிக்கிட்டானே அந்த காலை கிட்ட என்ன பண்ண போறானோ expressing pity. அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பரிதாபப்பட்டு பேசுறாங்க. அந்த சின்ன பையன் எதுவுமே காதலியே போட்டுக்காம The little boy did not listen to any of these comments, put his hands in his pocket, அப்படியே with உள்ள courage, போறான். ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான், அந்த got கால் in. அப்படியே சீறிக்கிட்டே நின்னுட்டு இருக்குது. இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான், கால் The அப்படியே bull was சீறிக்கிட்டே still முன்னாடி ferocious. வருது. மக்கள் எல்லாரும் பதட்டத்தோட அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான், People கால் are அப்படியே tense. முட்டை வரும்போது பாக்கெட்டுக்குள்ள மறைச்சு வச்சிருந்த 2 And புல்லு கட்டு அது அந்த காலை கிட்ட காட்டுறான். when காலை அப்படியே the சடனா bull வந்து came நின்னு to gore him, அது he மூடெல்லாம் took மாறி அந்த the புல்லு bundle of கட்டை grass சாப்பிட in his pocket. அந்த சின்ன பையனும் அந்த காளை அப்படியே The bull தடவிக்கிட்டு began வரான். eating காளையும் the grass. பக்கத்துல ஒரு குழந்தை மாதிரி நடந்து வந்துகிட்டு வருது. பக்கத்துல இருந்த ஒரு வயல்வெளியில அந்த He காளையை let the bull- மேய the விட்டுட்டு bull வரான். walked மக்கள் like a எல்லாரும் அந்த பையனை child. ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. அந்த And he அடிபட்டு led the bull கிடந்த அந்த to அனுபவசாலிங்க தலைய தொங்க போட்டு நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க. the ஏன்னா grazing பேசின ground there, பேச்சு அப்படி. and people looked at him with astonishment. வாய் இருக்குன்றதுக்காக நக்கலுமா நையாண்டியுமா Because நச the நச 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 other ஒரே groups were பேச்சு. making such comments. என்ன பண்றது, தலைய குனிஞ்சு அப்படியே நின்னுட்டு இருக்காங்க. அங்க ஒரு Now பெரியவர் வர they had to bow down their head. எப்படிப்பா இப்படி An elderly man came to the little boy and asked, எப்படி அந்த காளை "How did you tame this அந்த ferocious பையன் bull?" சொல்றான், ஐயா எனக்கு அந்த காளைய பார்த்தா He கோவமா replied, இருந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியல, அந்த காளை பசியோட இருந்த மாதிரி இருந்தது, அதனாலதான் அந்த "I wasn't sure the bull was angry or ferocious. I thought the bull was only hungry. And when I offered the grass bundle, அப்படின்னு சொன்னான். இத கேட்ட அந்த the bull பெரியவர் just சொன்னாரா, kept walking with me." இந்த சின்னவங்க The elderly man said, பெரியவங்க, அனுபவம் இருக்கிறவங்க அனுபவம் இல்லாதவங்க இதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது. யாரா இருந்தாலும் It doesn't அந்த matter. சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு Little தகுந்த மாதிரி children, என்ன elderly, பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்றாங்க, experience, inexperience, பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம whoever it சால்வ் is, பண்றாங்க, whoever is அதுதான் able to அதுதான் மேட்டர். address a problem and solve it. It's all about that. சோ நீ சூப்பர்ப்பா, என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீ சால்வ் பண்ணிடுவ அப்படின்னு முதுகுல தட்டி கொடுத்துட்டு You அந்த are a பெரியவர் super boy. You will be able to solve any problem. He patted the boy ஜல்லிக்கட்டு and left. காலை தான் நம்ம தமிழ்நாட்டு The Jallikattu அரசியல் bull களம்.
அந்த பெரியவர் தான் is the arena, political arena in Tamil Nadu. அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ள The ஸ்டைல் elderly man கெத்தா refers to the people of Tamil Nadu. The little boy who came with confidence, putting his hands in the pocket, he is. நான் இல்லைங்க, நான் இல்லை. It's not me. நீங்க நாம எல்லாருமா சேர்ந்து மாபெரும் மக்கள் சக்தியா இருக்கக்கூடிய நம்ம டிவிகே. He refers to TVK சின்ன பையன் that embodies you, me and everyone. That little boy refers to TVK. Thank you, thank you, thank you. மக்களை நேசிக்கிற ஒரு நல்ல தலைமை இல்லாததனால இத்தனை வருஷமா only because there is no leadership that loves people ஸ்டாலின் சார் கொடுத்த அந்த with no other option all these years நம்பி ஏமாந்த நம்ம மக்களுக்கு people voted for Mr. Stalin believing his ஒரு வெகுஜன மக்கள் இயக்கமா வந்ததுதான் நம்ம டிவிக்கு. now the right time அந்த முரட்டு ஜல்லிக்கட்டு கால கதை சொன்னோம், எதுக்கு சொன்னோம், யார் யாருக்கெல்லாம் சொன்னோங்கிறது the story of that jallikattu bull. Those who need to understand will understand now. இப்போ நாம ஒவ்வொரு வீட்ல உயிரா உணர்வா இருக்கிறோம். ஆனா நான் every household we are their life. நீங்க இருக்கிற ஊருக்கே வந்து உங்களை சந்திக்கணும் we are with them in thought. மனசுல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆசை. எங்க போறமா போயிருங்க. ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன் ஒரு எதிர்க்கட்சியா இருந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல நமக்கு எதிரா என்ன சூழ்ச்சிகள் நடக்குதுன்றது எல்லாருக்குமே an opposition party we question, you know, what are the வாக்குறுதியை கொடுக்கிறேன், conspiracies that happen around us, against us. I give you one assurance. கிராமத்துக்கும் நான் நேரடியா வந்து when our government is formed, I will come to every village. எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். I will meet every one of you. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டாலின் சார் ஒரு ஒன்னு உருட்டினாரு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Recently MK Stalin had எலெக்ஷன். எதுக்கான எலெக்ஷன்? நம்ம சட்டமன்ற தமிழ்நாடு சட்டசபைக்கான ஒரு தேர்தல் இல்லையா? spinned a story. தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் அப்படினு சொல்றாங்க. Assembly election, he said, is against Tamil Nadu and Delhi. He even said it's about Tamil Nadu versus NDA. தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் சொல்றீங்க. அப்புறம் இதேதாவது I'm asking, பார்லிமென்ட் எலெக்ஷன் are you going to contest for elections in Delhi? Is it for parliament election? Why do you pitch it that it's between Tamil Nadu and NDA? What's the logic? இந்த எலெக்ஷனை எப்படி டீல் பண்ணனும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும்ன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும். People know how to handle which election. நீங்க பார்க்கவே முடியாது. You cannot see such clear people like those in Tamil Nadu. They're very clear. இந்த போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த படை பரிவாரங்களோட போவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனா நீங்க only before they go for இந்த பால்டப்பா உருட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே சார். they would go with that kind of எதுக்கான எலெக்ஷன் சொல்லுமா? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஊழலுக்கும் நடக்கிற போர். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் லஞ்சத்துக்கும் நடக்கிற போர். between Tamil Nadu people and corruption. இந்த நிர்வாகத்தை சரியா செய்யாத இந்த திமுக அரசுக்கும் நடக்கிற போர். அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் உங்க ஆட்சிக்கும் நடக்கிற போர். incompetent DMK. ஸ்டாலின் சாருக்கும் நடக்கிற போர். It's a battle between Tamil Nadu people and MK Stalin. சொல்லணும்னா விஜய்க்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் நடக்கிற போர். In a nutshell, it's a battle between Vijay and MK Stalin. இதுக்கு நடுவுல இந்த NDA டெல்லி இதெல்லாம் என்ன லாஜிக்னே புரிய மாட்டேங்குது சார். தமிழ்நாடு தான் விஜய், இந்த விஜய் தான் தமிழ்நாடு. There is no logic talking about NDA and Delhi. It's a battle between TVK, a pure force, and DMK, an evil force. இந்த போர்ல மறுபடியும் ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாத இந்த பால் டப்பாவை உருட்டிக்கிட்டு இன்னொரு காமெடி வேற. அது என்னடான்னா அவரோட ஆட்சியில தான் தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலமா இருக்குதான். கரெக்ட். தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலம். Tamil Nadu under his rule has become a superstar state. அண்ணா அவர்கள் டைம்ல it's right only during the regime of
Kamaraj, Annadurai and MGR. Today, this is a useless model government. Tamil Nadu is not a superstar state. It's a state run by a super stand-up comedian. வர தடைகள் சதிகள் சூழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த 2026 only for your sake I am putting up with all these conspiracies, and TVK will fight elections with courage. நடந்த எலெக்ஷன் வேற, இப்போ நடக்க போற எலெக்ஷன் வேற. Elections held so far are different. Now it's going to be different. This is not a routine election every 5 years. This is an election that can happen only once in 50 years. அவங்களோட எதிரிகளை தான் எதிர்ப்பாங்க, அப்படிதான் எதிர்ப்பாங்க, அதுதான் யதார்த்தமும் கூட. ஆனா இந்த எலெக்ஷன்ல தான் ஒட்டுமொத்தமா எல்லாருமா சேர்ந்து ஒருத்தனை எதிர்க்கிறாங்க. Normally elections are between rivals, but for the first time all of them together are opposing one, because Vijay opposes corruption, bribes, he stands with people and people stand with him. எப்படி அந்த காண்டு தான் ஒட்டுமொத்தமா எல்லாருமா சேர்ந்து ஒருத்தனை எதிர்க்க காரணம். நீங்க எப்படி வேணா எதிர்த்துக்கங்க, all of them are fighting against one person, but the battle is just between two people. One is TVK and the other the election DMK. day la maximum enna பண்ணுவீங்க? On election day, what would you do? You would cast your vote and get back. That's the participation, right? But this time, உங்க வீட்ல இருக்கிற ஒரு விஜய் தான், உங்க வீட்ல இருக்கிற ஒரு விஜய் தான். Vijay in your house, Vijay in your house is the candidate. உங்க வீட்ல இருக்கிற ஒரு வேட்பாளர்னா அப்ப உங்க வீட்ல இருக்கிற மத்தவங்க எல்லாரும் வாக்காளர்கள் தானே? A candidate from your own family. உங்க அம்மா, உங்க அப்பா, உங்க அண்ணன், உங்க தம்பி, your mother, your father, your brother. அப்ப உங்க ஓட்டு விசில் சின்னத்துக்கு தானே எல்லாருக்குமே தெரியும். Isn't your vote for whistle symbol when one of your family members is fighting election? That's why they defame, they spread canon. They may not know that if they defame me, it's equivalent to defaming people. If you say I do not know politics, it's like saying people do not know politics. If you defame me, it's like defaming people and talking against them. Every act against me is like acting against people. People know this. People and Vijay are not different. People and Vijay are like flesh and blood. Yes. Inseparable. Sensitive sentiment. It's a sensitive sentiment. சாரி, இதை யாரும் அசைக்க முடியாது. Nobody can shake this up. மக்களை நேசிக்கிற விஜய் வேணுமா, மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்துற ஸ்டாலின் சார் வேணுமா? Do you want Vijay who's loved by people, or do you want Stalin who's against people? Do you trust Vijay or Stalin? This is the proof. இந்த தீய சக்தி, ஊழல் சக்தி, இதெல்லாம் ஏன் சொல்றோம், எதுக்கு சொல்றோம், யார சொல்றோம், மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும். People know who we refer to, why we refer to. மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும். People also know the only force, அப்படி இருக்கும்போது a challenger for DMK is TVK. வாண்டடா சில பேர் வந்து வண்டியில ஏறி உட்கார்ந்துக்கறாங்க. Some people deliberately come and hop into our vehicle ஏறி உட்கார்ந்துக்கிட்டு குரல் கொடுக்கறாங்க. சீரியஸா ஒரு போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது
இங்க காமெடிக்கெல்லாம் இடம் இல்லை பாஸ். There is no place for comedy when there is a serious concept happening here. ஒரு People know சீரியஸ் this. கேள்விய இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிங்க கிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். I want to ask a நீங்க serious அரசியலுக்கு question வரதுக்கு to the முன்னாடி உங்ககிட்ட politicians இருந்த now. சொத்து எவ்வளவு? Before you entered அரசியலுக்கு politics, வந்ததுக்கு what அப்புறம் was இன்னைக்கு the உங்ககிட்ட property you இருக்கிற had? சொத்து எவ்வளவு? அத And ஓபனா what is டிக்ளேர் the பண்ண property முடியுமா? you have now after your political அப்படி வந்த debut? காசெல்லாம் Can you declare that என்னென்ன openly? தொழில் செஞ்சு வந்துச்சு? என்ன வேலை செஞ்சு வந்துச்சு? உண்மையிலே நீங்க உடைச்சு சம்பாதிச்ச காசா இல்ல ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டைய போட்ட காசா? That fetched you this property. Was இதெல்லாம் it legal, ஓபனா டிக்ளேர் பண்ண illegal? முடியுமா? Can you declare it இதெல்லாம் நம்ம openly? கேட்டா எல்லா ஊழல்வாதிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம மேல சேத்தவாரி வீசுவாங்க. அத பத்திலாம் நமக்கு When we கவலை ask இல்ல. this, ஏன்னா நாம all யாருன்னு the மக்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். corrupt will join hands and hurl எனக்கு ஒரு புது flesh ஃப்ரெண்ட் on us. புது நண்பர் ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்காரு. யார் தெரியுமா? தெரியாதா? I have a new friend. முதல்வர் அவர்கள் You know who it is? It's Chief Minister. இப்போ ஒரு நிருபர் ஒருத்தர் கேட்ட கேள்விக்கு எனக்கு எதிரிகள்லாம் யாரும் இல்ல, அவங்க எல்லாருமே For a எனக்கு நண்பர்கள் reporter's தான் அப்படின்னு question, he சொன்னாங்களே. said, I don't have any அப்படி enemies. All நாங்கெல்லாம் our உங்களுக்கு friends, நண்பர்கள்னா he said. அப்புறம் ஏன் சார் கரூர் விஷயத்துல If ஏன் we are மேல your பழி தூக்கி friends, போட்டீங்க? Why did you put the blame on me உங்களுக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா for the Karur அப்படி tragedy? பேசிருப்பீங்களா? If you have a conscience, would you have spoken that way? அப்படி நாங்கெல்லாம் உங்களுக்கு நண்பர்கள்னா ஒரு ஈவென்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்கு ஒரு இடமோ ஒரு பர்மிஷனோ ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க? If we are your friends, நீங்களே பண்ணிட்டு போற why don't you grant permission for the public உங்களோட meeting? உண்மையான நண்பர்கள் யாருன்னு சொல்லட்டுமா? You keep லஞ்சம், ஊழல், அரசியல் ஆதாயம் இதெல்லாம் தான் உங்களோட உண்மையான நண்பர்கள். பர்சனலா நீங்க எப்படி வேணா இருந்துக்கங்க சார். நமக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல, நமக்கு அது அவசியமும் இல்ல. Be the way you want personally. I don't bother. தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஆட்சி. But your rule கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி is a bad ஒரு rule, விஷயம் ஒண்ணு something சொன்னேன். Tamil Nadu does not require. Recently I had said something very சின்னத்துக்கு தான் வாக்களிப்பாரு அப்படின்ட்டு கற்பனையா ஒண்ணு imaginatively சொன்னேன். that even the chief minister would vote for the நிஜமாவே whistle symbol. நமக்கு ஆதரவா Today, ஒரு கோஷத்தை really, எழுப்பியிருக்கிறாங்க. அது என்ன தெரியுமா? எங்க வாக்கு in our சாவடி support they have வெற்றி raised வாக்கு the சாவடி. slogan அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? எங்க வாக்கு சாவடி விஜய் வாக்கு சாவடின்னு அர்த்தம். They say they are polling booth as a victory booth. The real meaning is இந்த ஆதரவை பார்த்துட்டு அவர் அறியாமலே எப்படி பேசிட்டாரு என்னமோ தெரியல. it is Vijay's 50 வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் booth. அரசியல்ல. I'm not உண்மை sure என்னன்னு he ஒத்துக்கிட்டு had தானே ஆகணும். spoken this inadvertently. ஜனநாயகம்ங்கிறது பெரும்பான்மை ஆட்சி அதிகாரம் சார்ந்தது மட்டும் இல்ல, சிறுபான்மை மக்களின் உரிமைகள் Democracy is just உணர்வுகளும் not about புனிதம்னு majority. நினைச்சு It's அதையெல்லாம் also காப்பதற்கு பெயர் தான் ஜனநாயகம். to think 1963 it's அறிஞர் sacred அண்ணா about பார்லிமெண்ட்ல the minorities' பேசினது rights சொல்றது ரொம்ப பொருத்தமா and இருக்கு. sentiments. அறிஞர் அண்ணா சொன்னதுதான் Another had TVK-வோட spoken நிலைப்பாடு. in the parliament. இந்த ஸ்டாண்ட்ல நாம 100% That is உறுதியா TVK இருப்போம். stand. யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் We இதுல will சமரசமே be கிடையாது. 100% strong in this. மதச்சார்பற்ற சமூக No நீதி compromise. நம்ம அடிப்படை கொள்கைகள் ஒண்ணு, அதுல எந்த Secularism and social justice are our basic இதெல்லாம் மறந்துட்டு policies and there will be no change. எதையாவது செஞ்சு ஓட்டு Forgetting all this, வாங்குறதுக்காகவே இங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கள மாதிரி நமக்கு there are அப்படி some சில people who want பிரச்சனைகள் to get எரியிற votes நெருப்புல எண்ணெய in any ஊத்துற way. எண்ணமே இல்ல. We do not have any plans to pour oil in already burning fire. இங்க சில அரசியல் கட்சிகளும் சில அரசியல் தலைவர்களும் ஒரு Some சில political நேரங்களில் parties and leaders, அமைதியா இருந்தாலே sometimes, ஒரு பிரச்சனையும் வராது. if they keep quiet, இப்போ that's enough. There will be no problem at all. பிரச்சனைக்கு வருவோம். இந்த கரண்ட் பிரச்சனைக்கு வருவோம். Let's talk about present issues, current issues. சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? Let's talk about electricity. Did you fulfill the promise to 100 யூனிட் make monthly billing for electricity? செலவாகுது ஒரு மாசத்துக்கு. In many houses, they consume just 100 units. அவங்க அந்த காசை கட்ட தேவை. If you
issue monthly billing, it will be completely free for them. இப்ப சப்போஸ் அது But when you do it once in 2 months, அது அவங்களுக்கு ஒரு if they had மிகப்பெரிய சுமை consumed தானே 200 units or more, இது எந்த then கணக்குல it becomes a ஒரு big மாதிரி burden for them. மாடர்ன் கரப்ஷன் How can we take it? எடுத்துக்கலாமா? Is it modern? அடுத்து பஸ் வசதி நிறைய கிராமங்கள்ல Then, பஸ் வசதி with respect to bus facilities, many villages don't have buses. நாங்க பஸ் விட But they'll come screaming when we allege many villages don't have buses. முதல்வர் If it is true, நம்ம தங்கச்சி ஒருத்தவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களே எங்க ஊருக்கு one ஒரு little மினி பஸ் ஆது விடுங்க சார் sister அப்படின்னு கேட்டாங்களே asked அது a எந்த question to கணக்குல the chief எடுத்துக்கிறது? minister to let at least a mini bus to her village. நிறைய மலை கிராமங்கள்ல பஸ் வசதி இல்ல In many நிறைய மலை கிராமங்கள்ல ஹாஸ்பிடல் வசதி இல்ல villages on the hills, no bus services, no hospitals. பஸ் வசதி How ஹாஸ்பிடல் important are வசதி these இல்ல two issues? இல்லாததனால Because of the lack of bus facilities in hospitals, அந்த ஆபத்து many இருக்குது எவ்வளவு நியூஸ் பாக்குறோம் undergo இதெல்லாம் எந்த கணக்குல childbirth at home. அடுத்து இது எல்லாம் How மீட்டிங்ல dangerous பேசலாம் it is. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு Women's security, which தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு சொல்றாங்க they claim in every public meeting that பெண்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அது security is number one in Tamil Nadu. Tamil Nadu leads in women's security. But people say we are not safe and that we are not safe model. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அப்படியே கொட்டி கிடக்குதான் இப்படி சொன்னா எப்படி சார் கேக்குறவங்க என்ன கேசரி சாப்பிடுறாங்க நினைச்சீங்களா? Do you think people are so naive to believe that? அடுத்து இந்த சட்டம் ஒழுங்கு அது காணாம போய் ரொம்ப நாள் Next is law and order. Law and order is missing for a long time. எங்க போனாலும் இந்த மக்கள் கிட்ட இந்த சட்டம் ஒழுங்கை பத்தி பேசி ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான்னு முதல்வர் அவர்கள் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் சங்கடப்பட்டாராம். நாம என்ன The chief பண்றது? minister had நாம தான் தமிழ்நாட்டோட told his close aides that Vijay keeps raking up the law and order issue. What can I do? நாம எப்படி சைலண்டா இருக்க முடியும்? How can we be நாமளும் quiet? கேள்வியா கேக்குறோம் ஆனா பதில்லாம் வந்த மாதிரியே தெரியல. We keep asking questions but no answers. என்ன பண்றாரு? Only if they have answers they'll be able to give. வருஷமா பதிலே சொல்லாம அப்படியே கடந்து வந்துட்டாரு. ஆனா இனிமே அப்பெல்லாம் இருக்க முடியாது. Yes. பதில் சொல்லி ஆகணும். மக்களே Past these 5 years without answering. ஒரு எண்டு கார்டு போடணும் அப்படின்னா If அவங்கள சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றதுதான் ஒரே this law and order atrocity ought to be ended, அதுக்கான there's no other way than switching it off. And the remote control for that is the upcoming election. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் And அதுதான் நம்ம விசில் சின்னத்தோட பட்டன். you'll have to just press the button for the whistle symbol. ஒவ்வொரு இவிஎம் And that is மெஷின்லயும் enough. விசில் சின்னத்துக்கு நேரா இருக்கிற அந்த பட்டனை If you register பச்சக்கு by pressing the button against பச்சக்குன்னு ஒரு the whistle symbol, அப்படியே அவ்வளவுதான். நாம காஞ்சிபுரத்துல பேசும்போது நம்மளுடைய விஷன் என்னன்னு சொன்னோம். இப்ப in அதனுடைய Kanchipuram, at the Kanchipuram meeting, we had shared a vision. I would like to share உறுதியா சொல்றேன், சத்தியமா சொல்றேன், in continuation of a vision, clearly and strongly. ஆண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நம் ஆட்சியில நம்பர் 1 இருக்கும். We will give number 1 priority for security of boys and girls. Law and order will be very strict. பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் முதல் தரமா இருக்கும். Government schools and colleges will be of top quality. கோச்சிங் சென்டர் போய் படிக்க அவசியமே இருக்காது. There will be no need to spend lakhs for coaching centers. போட்டி தேர்வுகளை ஈஸியா சந்திக்கிற வகையில் government schools and syllabi in colleges will be of high standard to take பள்ளி such பாடத்திட்டங்களிலே competitive exams. அடிப்படை அரசியல் சாசன சட்டம் சேர்க்கப்படும். Constitutional lessons will be ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்கள் added in வங்கிகளின் curriculum. செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றை அணுகும் முறை குறித்து மாணவர்களுக்கு தெளிவான புரிதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் தேர்வுகள் செயல்முறை பாடமாக கற்பிக்கப்படும். Will be இந்தியா taught முழுக்க in உள்ள banking ஒன்றிய and அரசு other சார்ந்த such. கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் அதன் சேர்க்கை அட்மிஷன் குறித்து புரிதலும் தெளிவும் மாணவர்களுக்கு உருவாக்கப்படும். There will be அனைத்து அரசு awareness பள்ளிகளிலும் building among பெண் students குழந்தைகளுக்கு on admission சுத்தமான to சுகாதாரமான many renowned government மற்றும் schools and தரமான colleges. கதவுகள் பொருத்தப்பட்ட
ரெஸ்ட் ரூம்கள் அமைப்பது உறுதி செய்யப்படும். Secure restrooms for women, girls. போதைப் பொருட்கள் இல்லாத தமிழகம் உருவாக்கப்படும். We'll create a Tamil Nadu without மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும் எஸ்பிக்களில் சரி பாதி பெண்களாக இருக்கும்படி செய்வோம். 50% of collectors and SPs will be women. We will ensure that. பிரசவம் பார்க்கும் வசதியுடன் அமைக்கப்படும். In hilly villages, we will establish primary health centers கிராமங்களே இல்லை என்ற நிலை உருவாக்கப்படும். ஏற்கனவே அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் அமைப்பு இருந்தாலும் ஆட்டோ, டாக்ஸி மற்றும் லாரி டிரைவர்களுக்கென அவர்களின் நலன்களுக்காகவும் குடும்ப நலன்களுக்காகவும் தனியாக நல வாரியம் அமைக்கப்படும். Separate welfare board will be constituted for auto and bus and truck drivers. தொழிற்சாலைகள் அமைக்கவும் தொழில் வளம் பெருக்கவும் தனி கவனம் செலுத்தப்படும். Will give special attention for industrial development. கருத்துக்களை அறிந்து farmers, weavers, அவர்களுக்கான திட்டங்கள் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப உருவாக்கப்படும். and fishermen. Tailor-made schemes would be evolved. அறிவாலயம் பக்கத்துல யாரு நடந்து போனாலும், அறிவாலயம் பக்கத்துல யாரு நிழலுக்கு ஒதுங்கினாலும் கூட்டணியில சேர்த்துக்கிறார். Mr. Stalin now admits whoever comes near the DMK headquarters வச்சிருக்கிற பணத்துல ஒரு பங்கு ஒன்னு கொடுத்து to rest in their shade அதுக்கு பேர் வந்து by offering a share in their loot. இந்த கல்லாப்பெட்டி கூட்டணியை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்த்திருக்கிறார். ஆனா அவருக்கு நான் சொல்றேன், with so much of difficulty he has built that alliance. கூட்டணி கணக்குகளோ இந்த கொள்ளையடிச்ச பணத்தை வச்சு எங்க மக்களை ஏமாத்தி எல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது. That old alliance arithmetic and your corrupt வித்தியாசமான nothing would work. விசில் புரட்சி எலெக்ஷன். Now this election is going to be seeing a whistle revolution. உங்களோட நான் இருக்கேன், நம்மளோட நம்ம மக்கள் இருக்காங்க. I am with you. People are with us. What more we need? Be confident. வெற்றி நிச்சயம். Good things will happen. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை Victory is for sure. வணக்கம். Thank you. என் நண்பர்களே, ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். நான் திருப்பி இங்க இருந்து 4 hours சென்னைக்கு போகணும். தயவு செஞ்சு யாரும் என் வண்டிக்கு பின்னாடியோ என் வண்டி சைடுலயோ take another 4 hours for me to reach நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். Chennai. Do not follow me on bikes, either behind me or on the side. This election will be a revolution is the sign off by the man on your screens, TVK Chief Vijay, who in his fiery speech has taken on MK Stalin. He says that this election is an election between me and Stalin. Tamil Nadu is ruled by a stand-up comic, pure force versus evil force, something that he even said earlier in Salem in the rally that he had addressed there, calling the TVK pure force, calling the DMK evil force. He says the fight is between Tamil Nadu and Stalin, and the chief minister, he alleges, is trying to buy votes. He also went on to say that Stalin has no empathy and that his true friends are corrupt politicians. Taking the stage there for the last 40 plus minutes, TVK Chief Vijay tearing into Stalin once again. He has reiterated over and over again in every public meeting of his since Karur that this is a fight between Vijay and Stalin, and it's a fight between Vijay and the rest. There on stage, he's receiving a warm thank you from his cadre. You have more than 4,000 people there who had gathered to listen to Vijay speak. We have Mr. Saravanan from the DMK joining me on the phone line. A list of things, Mr. Saravanan, said by the actor-turned-politician in his speech, but the bottom line is that once again, Vijay has said this is a fight between him and MK Stalin. Your first comment. This shows the insecurity of the chief ministerial candidate of the TVK. He always wants to pitch himself against Mr. MK Stalin because he knows
Mr. MK Stalin is the tallest leader, and that is why he is constantly, nobody in the state of Tamil Nadu is taking him seriously, in the sense that he is going to be a serious contender for the Chief Minister's chair, and our parliamentary system does not follow that kind of one person versus the other person. It is all about ideology, and it's very surprising. He says that he doesn't understand when you say it's TN versus NDA, because he's afraid of the BJP. That is why he is not raising his voice. His movie was blocked. He was not even able to raise his little finger against that. And how can you expect that he's going to fight the mighty BJP against the injustice done to the state of Tamil Nadu? When our leader says it's TN versus NDA, it means he points out the injustices. It points out how the funds are not given to us. He points out how every good scheme, it goes to the other states ruled by the BJP. He points out the Hindi imposition. He points out how they are trying to suppress the culture of the Tamil Nadu. When he says TN versus NDA, he points out how they mock Tamils and the Tamilian culture. In Odisha, we saw Amit Shah challenging openly, can a Tamilian become rule the state of Odisha? And the kind of crass advertisements released by BJP. Tamil Nadu is fighting that. Our leader, Mr. MK Stalin, is fighting all these things. But Mr. Vijay is afraid of the BJP. Yes, he will not even mention the words BJP, as though BJP doesn't exist in this universe at all. All right. And also, let's just stick to what he said about the Chief Minister of the state as well, Mr. Saravanan. He goes on to say that Stalin says Tamil Nadu is a superstar state under his rule. Tamil Nadu was superstar state under Annadurai and MGR, but not under Stalin. And then he goes on to call Stalin a super stand-up comic. See, that's what, when you don't have substance, when you don't have anything to point out, this is how they get personal. And Mr. Vijay, if you ask him about the economic growth, somebody should have pointed out, showed the mirror to his face and told him, see, Tamil Nadu's economic growth is 11.9%. The manufacturing growth is at 14.9%, which is 3 times the national average. This is the kind of growth Tamil Nadu has given. This is the 39 lakh jobs have been added by, as pointed out by the EPFO. This is, our leader is a rock star chief minister. And Mr. Vijay is again proving himself to be a cheapo. He is a cheap man, taking pot shots, personal pot shots. If he take personal pot shots against Mr. Vijay will quit politics. But we won't do that. All right, thanks for joining me on the phone line there, Mr. Saravanan. I also have Sam Daniel with us. He's been translating that entire speech of Vijay for our viewers here on Breaking Ground. Sam, the fight is between Stalin and Vijay, a declaration by Vijay which he's made earlier. Little or no mention of any party but the DMK in that 40-minute speech of his. That's right. He took on the DMK on issues of corruption, women's safety, and also in terms of acquisition of properties by politicians, and completely refrained from talking about the central government, the BJP, and more particularly nothing about his film Jananayagan that has not been granted certification even a month after its scheduled date by the Central Board of Film Certification. And he calls that Tamil Nadu will witness what he says a whistle revolution, people voting the TVK to power in Tamil Nadu. And he calls Chief Minister MK Stalin a super stand-up comedian, and the Tamil Nadu state witnessed a superstar growth of status only during the tenure of Annadurai, Kamaraj and MGR, and not now. And he also promises security and safety for minorities, saying that there will be no compromise on that. And he also promises child safety, women's safety, besides industrial development, particularly development of farmers, weavers and fishermen. And that's one thing that was conspicuously absent, was no criticism, strengthening speculation that Vijay is perhaps scared to criticize the BJP, although initially he called the BJP as his ideological enemy, and that this, many say, also strengthens their doubt and speculation that Vijay could be the BJP's team B. The DMK calls Vijay's speech in a sense childish and far from truth in terms of development.
But for specific question on women's safety, they say, in spite of the spurt the state at one phase witnessed a rise in crime against women and sexual assaults, overall, they claim that statistically, Tamil Nadu is far ahead in women's safety compared to many other states where women's safety is certainly very, very low, as they put it. Do stay with me. We also have Vijay joining us live at this point. Okay, we've lost Vijay's connection, I believe. Coming back to you, let's just talk about that allegation against Vijay as well, Sam, about being the team B for the BJP, because we've seen him in Salem, we've seen him in other public events before Salem, we've seen him today. Very little being said about the BJP, and the DMK stating over and over again that one should question Vijay over why is it only the DMK that he hits out at and not the BJP. The TVK argues that the state elections are between those aspiring to capture power and those who are already in power. And in this case, it's the ruling DMK, and that's why they target the ruling DMK. They do not consider that the key opposition AIADMK is in the equation at all. That's why the TVK leader, Vijay, they argue, always pitches the upcoming election between the ruling DMK and the TVK. But there's no specific response why TVK Chief Vijay is refraining from criticizing the BJP, particularly after the Karur stampede tragedy that killed 41 people. But a few days ago, a key leader from Vijay's team had on record said that the BJP at the center is beginning to mount pressure on the TVK in a bid to get their support to the NDA in Tamil Nadu before elections, and that they will not buckle under pressure. Specifically, he pointed out that the center is using the CBI probe into the Karur stampede tragedy and also the film issue, Jananayagan issue, in a bid to mount pressure, and that the party will not yield to that. But the BJP has denied these allegations, saying that these two are professional bodies, both the CBI and the Film Certification Board, and the party has nothing to do with that. They also argue that it was Vijay in the first place who had moved the Supreme Court asking for an independent probe into the Karur stampede tragedy, after which the top court ordered a CBI probe. All right, stay with me. I think we have Vijay now. He is at the venue of the rally where Vijay was speaking. We don't want to confuse the two Vijays. Our correspondent here live with us. Vijay, just the big takeaways, the mood around with the cadre at this point where you are. No, just now Vijay concluded his speech. You see how the supporters of Vijay are returning after listening to their leader's speech, and they are very after listening to this speech. Let's ask them. So, சொல்லுங்க ஏன் விஜய் ஆதரிக்கிறீங்க? சார் அவர் வந்தா ஆட்சி மாறும் சார் எல்லாரும் நடந்து சொல்றாரு. விஜய் crowd is into and we have women and youth and even elders supporters listening to it. They are returning back and they are rising slogans against the DMK government, are also in support of TVK Chief Vijay, and you see even kids are here. Even though they don't have voter ID, they are here to see their Vijay as an actor with a whistle, as recently Election Commission of India allotted whistle symbol for TVK. They all have whistle on their hands, and TVK chief once again, Vijay reiterated. Whistle in their hands, and Vijay is something, the person that they're cheering for. There seems to be a bandwidth issue there with our correspondent Vijay, but we'll have to leave it there. But a fiery speech by TVK Chief Vijay, where he's once again directly taken on the Chief Minister, the incumbent Chief Minister of the state of Tamil Nadu, alleging corruption, alleging that the people have lost faith in Stalin and now are trying to find faith in Vijay. Vijay there sounding the poll bugle once again ahead of the state election. Moving on, Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin launched a sharp attack on the BJP AIADMK alliance ahead of the state elections. He stated that the ED, the CBI and other agencies are being used by the BJP to intimidate
political opponents. Our leader has already given a reply to them in Madurai, is what he said. He further stated that we will not compromise our self-respect even if we lose our lives. We will never compromise on the rights of Tamil Nadu. We will neither fear the Enforcement Directorate nor Modi. Not just Modi, he went on to say we are ready even to face his daddy. Meanwhile, the BJP has reacted sharply and condemned Udhayanidhi's remarks on Prime Minister Modi. இந்தியாவிலே ஒரு இயக்கத்தை எப்படியாவது மிரட்டினா உருட்டலான்னு இடி சிபிஐ இப்படி பல்வேறு அமைப்புகளை வச்சு மிரட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் நேற்று மதுரையில தெளிவா ஒரு பதில் சொன்னாங்க. என்ன வழக்கு தானே போடுவீங்க? திமுக உடன்பிறப்புகள் பார்க்காத வழக்குகளா? மொழி போர்ல ராணுவத்தையே எதிர்த்து நின்ற இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். மிசாவை பார்த்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் உயிரே போனாலும் எங்களுடைய சுயமரியாதையை நாங்க என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகளை என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அதனாலதான் அடிக்கடி நான் சொல்வேன், நாங்க ஈடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம், மோடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம். மோடி இல்ல, மோடியோட டாடி வந்தாலும் நாங்க ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கின்றோம். Udhayanidhi Stalin is a deputy chief minister. He should know, he should behave in a matured way. And talking like this is not going to serve any purpose. So it says the cheaper mentality, the lowest mentality of the Dravida model DMK, and a person of his stature talking about the Prime Minister, I think he should be more matured enough. Tamil Nadu elections are likely to take place within 2 months. The political statements by the ruling party shows that they are in frustrated mood. Not only that, but they are also attacking personally our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. If they are not frustrated, if they are not losing the elections, why should the leaders of DMK, mainly the CM son, Mr. Udhayanidhi, to take the name of Modi ji and his father also? किसी से उनको डरने की जरूरत भी नहीं है, कोई डरा थोड़े ना रहा है उनको। प्रधानमंत्री जी से तो किसी को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्नेह करते हैं, वो तो कहते हैं कि देश की एक एक जनता सबके साथ है और उनके साथ है, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन लक्ष्यों पर काम करने वाले प्रधानमंत्री। The probe picks space in the Congress stir at the AI summit case, and the latest Youth Congress President Uday Bhanu Chib has been summoned and is being questioned by the Delhi police. This even as police arrested the 5th accused in the case and detained 4 others. In fact, the case has triggered a major political war of words. Prime Minister Narendra Modi led a scathing attack, accusing the opposition of compromising the nation's dignity at an international stage. The Prime Minister says the summit was turned into an arena for what he calls naked politics. He adds the nation knows Congress is ideologically naked, alleges the party crossed all limits at the summit, and says Congress should not insult the nation. Congress leaders were quick to hit back, claiming the Prime Minister is scared of peaceful protests, alleging that democracy is missing from Prime Minister Modi's dictionary, and claimed that the Congress's questions remained unanswered. साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया
वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी पर क्या बोलना। मुझे तो डर लगता है कहीं राहुल गांधी अगले सत्र में खुद अंडरवियर और गंजी में आ न जाए हाउस। The Lok Sabha, when leader of opposition was not allowed to speak in the motion to thank the honorable president, then only the women MPs protested. Therefore, they were protesting for a cause that allow the opposition to speak. And you were afraid to come to the parliament, Prime Minister. It is not that MPs were women MPs who belong to the scheduled caste and backward class were misbehaving. They were protesting. No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. रही बात यूथ कांग्रेस के लड़कों की, पिछले 48 घंटे में 16-17 शहरों में जो धरपकड़ कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी तक हमें नहीं दी। कोर्ट का ऑर्डर है कि एफआईआर की कॉपी दीजिए, वो भी हमें नहीं मिल रही। इतना डरते हैं ये विरोध प्रदर्शन से, एक अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके शब्दकोश में लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं है। मोदी जी अमेरिका के साथ जो डील हुई है, जो किसान विरोधी डील हुई है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उस पर चुप्पी क्यों है? अनेक बिंदु पर कांग्रेस प्रश्न उनसे पूछ रही है, उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने कांग्रेस के दफ्तरों पर जो हमला किया है, पत्थरबाजी की है, और पत्थरबाजी भाजपा कर रही है और कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ये क्या न्याय है? प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन प्रदर्शन करने का अधिकार ये नहीं है कि उसमें हिंसा का रास्ता अपनाया जाए, पत्थरबाजी की जाए। मैं उसका विरोध करता हूं। Akhil now joins me live. Akhil, the last time we spoke, the Youth Congress President Udhayanidhi Stalin had been summoned by the Delhi police in this case. What's the latest you can share with us? Well, Vadika, if you see that there are three
key points that needs to be highlighted in this investigation. Earlier this morning, what we have seen that the one individual was arrested from Gwalior, and then what we have seen that so far, if you see the tally, what we have seen that there are 5 arrests and there are 4 more individuals who have been detained by the Delhi police team. And out of those 4 individuals who have been detained, 2 are from Madhya Pradesh and 2 are from Uttar Pradesh. Right now, what we have seen that Indian Youth Congress President Udhayanidhi has been summoned by the Delhi police team, and after that, what we have seen that senior officials, including the joint CP range officials, have arrived over there for questioning. So right now, questioning of Udhayanidhi is still going on at Tilak Marg police station right now. All right, thanks for joining me live. That's the latest we have on that developing story. There's some breaking news coming in. The news is coming in from Bulandshahr in the state of Uttar Pradesh. What we're being told is that an Indian Air Force personnel and his father were allegedly assaulted by members of a wedding procession in the area. The incident occurred after the two objected to people drinking and creating a ruckus on the road. Pratham Singh, who is posted with the IAF, was returning from a family engagement ceremony along with his father Jitendra Singh, who was a primary school principal. The victims alleged that several members of the procession were holding liquor bottles and dancing in the middle of the road, causing a traffic jam. Those are the visuals we have of them being allegedly thrashed on the road. Reactions coming in. जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में दिनांक 20 फरवरी 2026 को एक घुड़चढ़ी के दौरान जो है एक स्कूटी पे सवार जो है पिता पुत्र, जिसमें से पिता जो है सरकारी अध्यापक है और पुत्र जो है एयरफोर्स में अधिकारी है। घुड़चढ़ी के दौरान इनके द्वारा अपनी स्कूटी जो है घुड़चढ़ी वाले रास्ते की तरफ ले जा रहे थे। इस दौरान बारात के कुछ जो है वहां मौजूद लोगों से स्कूटी पे सवार पिता पुत्र की बहस हुई। बहस के दौरान दोनों के बीच जो है मारपीट, लड़ाई झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें मेरे बेटे के सर में बहुत ज्यादा चोट आई है, उसका टाँके हैं और मेरे भी सर में चोट आई है। पुलिस ने आपकी FIR दर्ज की? पुलिस ने हमारी मदद की है सर पूरी, और पुलिस ने हमारी FIR दर्ज की है, हमारी मदद की है, हम अस्पताल पहुंचाया, सारी मदद की है सर पुलिस ने हमारी। Joining me live on the story, Ranveer, I want to understand from you, when and how did this situation escalate into what we're seeing on our screens there? A barat was going on and the groom was trying to ride on the horse, and during that a scooty was going through nearby. So due to some using of horn, and hot talk erupted between the Baratis and the scooty owner. So during this scuffle, the argument turned into an heated argument, and then the mob, they assaulted Air Force officer Pratham as well as his father. So on the basis of information given by the victim's father, as well as he's also a victim, police lodged an FIR and trying to identify the people who was there and who beaten the Air Force officer in Bulandshahr. So CCTV footage as well as video footage is with the police, and police is trying to identify the accused in this case. So obviously on a very petty issue, this scuffle erupted and the mob thrashed the Air Force officer as well as his father. So police is now investigating the case. That a lack of civic sense, when pointed out, leads to this unfortunate situation there in Bulandshahr. Ranveer, thanks for joining me live. So we do a short break. When we come back, we're going to post-mortem that big defeat at the hands of the Proteus that India was handed last evening. More on that in moments from now. Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola Signature, India's #1 camera phone. Grab Motorola Signature today.
1983 to now, I have seen cricket evolve, but the mindset to win never changed. I tell you that what win matches and what doesn't. This T20 World Cup, let's talk cricket, controversies and more on NDTV. लोग कहते हैं कि जिंदगी एक फिल्म की तरह होती है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बचपन से पता था मेरे सपनों में दम है, आगे नहीं सबसे आगे जाना है, स्टार नहीं सुपरस्टार बन के दिखाना है। नाम मिला, फेम मिला, प्यार मिला, I was not just running, I was flying। सबकी जुबां पे बस एक ही नाम, यो हनी सिंह। लेकिन फिर ब्लॉकबस्टर कहानी में आया एक ट्विस्ट, 7वें आसमान से सीधा गिरा मैं जमीन पर। फिर क्या, खुद पे काम दोबारा शुरू, फैंस ने फिर प्यार दिखाया, फिर स्टार नहीं सुपरस्टार बनाया। है ना मेरी जिंदगी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। शुक्रिया आपकी प्रेयर्स का और आपके प्यार का। कॉन्सर्ट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, बट दिस इज गोना बी कॉन्सर्ट ऑफ अ लाइफटाइम, क्योंकि मेरे फैंस ही हैं मेरी विक्ट्री, मेरी हिस्ट्री, मेरी ग्लोरी। सो कम एंड विटनेस Yo Honey Singh, this is my story. What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood. इनको यहाँ से जाना ही होगा। जय मां दुर्गा! There is no bigger battle in 2026. And nobody has reported Bengal like I have. Buckle up for an unforgettable election thriller. Will the BJP breach Mamta's fortress? TMC जावे, BJP आसमे। Can Didi fight off her life's biggest challenge? BJP double engine সরকার এই লড়াই বাঁচতে হবে। Battleground Bengal with Manogya Loiwal. Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Raut, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m. Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu, so many attacks, the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews. It's incredible. He has seen history break, live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting. Welcome to Left, Right and Center. Hard facts. War-struck country. Hard questions. In the Ukraine. 30 years of trust. In the Kargil area. North Ukraine. In France. In Italy. At Srinagar. Vishnu Shom for NDTV. Vishnu Shom. Only on NDTV. Across the country. He has tracked the pulse of power from News just coming in. A member of the AIMIM, who is the Delhi chief, Dr. Shoaib Jamai,
has come out and spoken out on Team India's performance. He has said ignoring talented and promising cricketers like Mohammad Shami, Mohammad Siraj, Aqib Nabi and Sarfaraz Khan, and including cheap players, will surely cost you dearly. Gautam Gambhir needs to understand that he's no longer BJP MP, but a coach. Has the Indian cricket team truly fallen prey to hate politics, is what he asks. I have Tejshree joining me live on the story. Politics taking over the story, which is the defeat of Team India at the hands of South Africa. Tejshree. Well, you see, if we talk about this entire series, this was the first match that India lost. But keeping all these things aside about winning or losing the game, now the AIMIM leader Shoaib Chamai is giving a communal spin to this entire matter, keeping in mind that it was AIMIM who keeps on alleging that it is BJP or the current government who keeps on communalizing all the issues, who keeps on spreading hatred in the country in the name of religion. But now the leader of AIMIM, Shoaib Chamai, has come forward and have very categorically stated the names of the players who have not been included in the Indian cricket team. And he also in fact went on to claim that it has been done deliberately by Gautam Gambhir to include all these players, and perhaps that is why India has lost this match. Now needs to be seen that how this entire controversy, politically escalates, and will the players, or for that matter Gautam Gambhir, will react to this. Okay, thanks for joining me live there. But staying with cricket, we're going to have Boria Mazumdar and Rika join me shortly. But before that, let's just tell you, India's chances of reaching the T20 World Cup 2026 semi-finals were dealt a massive blow on Sunday after Suryakumar Yadav-led side suffered a 76-run loss against South Africa in their first Super 8 match in Ahmedabad on Sunday. Heavy criticism coming in for the team, the captain and the coach. 2 wickets, then 3. India had South Africa exactly where they wanted. Another wicket goes. But what followed, according to Ryan Tendoshkata, was a tactical miss. The assistant coach critical of Suryakumar Yadav's captaincy. To have that strangle on South Africa, 30 for 3, whatever they were, and then to sort of adopt a defensive bowling strategy, again, I thought that was a missed trick. When the pressure flipped, the questions began about tactics, team balance and decision-making under pressure. The first talking point was the team selection. Why leave out Vice-Captain Akshar Patel? Tendoshkata defended the call. And then obviously someone has to give way. So, do we leave a batter out and get another bowler in? And the decision was based around there. But certainly it's not to take anything away from Akshar and his leadership and how important he is. With the best intentions, we're trying to pick the best 11 to win the game, and I hope Akshar takes in the same spirit as well. Then there were bigger concerns like India's batting approach. The team has repeatedly lost early wickets to off-spin in the power play, and that has been creating a chain reaction. Early wicket, pressure on middle order and collapse in the tempo of the chase. There's different ways to go about a chase, so even setting a score, and like I say, we've spoken about it a lot, but we haven't implemented it across the board, and I think that's cost us in some of the performances. The math is now brutal. India's net run rate is minus 3.8. This marks an end to India's winning streak in T20 World Cup. South Africa sunk India at the Narendra Modi Stadium on Sunday night, leaving them desperate for 2 wins in 2 matches against Zimbabwe and West Indies. Any slip will see India getting knocked out of the World Cup. At the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad with camera person Ravinji Rohit, this is Rika Roy for NDTV. Joining me live, Rika Roy and Boria Mazumdar. Thank you for joining me here on Breaking Ground. Boria, I'm going to start with you. This is an MCQ, a multiple choice question I put to you. Where did Team India falter? Was it its batting? Was it its bowling? Was it its fielding? Was it the selection, or was it all of the above? All of the above. All of the above by a million miles. I mean, there is no chance of one thing resulting in a loss like this. All of the above. And at the same time, you can kind of attribute this to 2 things. One, you were not able to cope with pressure in the manner that you should have in a home World Cup. And number 2, and this is a positive, that you had to kind of
lose one big game, it's gone and out of the way. So this social media meltdown that you are seeing, Vedika, everybody is bad overnight that you are seeing. Yeah. Everyone who is not playing the World Cup is actually a better player, which social media decides. All this is complete nonsense. The team faltered. It was an aberration in every sense, like you just put that question to me. But I still think India will make the semi-final. They will come good in the next two games, and they will control their fate. Okay, Rika, what are the changes India is not considering at this point? Well, that's a difficult question to answer. What are the changes India is not considering? But let me start with the changes that they are seriously looking at. For once, they're thinking about bringing Sanju Samson in to break the clutter on the top of having so many left-handers. That's a real conversation that's happening in the dressing room right now as we speak. And there are a couple of days before the next match, which is against Zimbabwe in Chennai. India will be happy not to meet Australia for that match because Zimbabwe qualified for the Super 8. Australia didn't. They got knocked out. The other change, and there is huge pressure on India to bring back Vice Captain Akshay Patel, and questions are being asked, why was Washington Sundar played? Of course, the assistant coach last night answered that it was due to the matchups, but it really didn't add up to why they would have fielded kept Akshay Patel out and fielded Washington Sundar. So those are the two conversations that are happening. The third is a suggestion that Kuldeep Yadav be played in the 11 for the next two matches. Absolutely crucial for India because not just they need to win, but they need to up their run rate. Now the run rate is minus 3.8, and that really might hurt India in the tail end as they get into the semi-final. Surya Kumar Yadav had said, and the assistant coach had said last night after the defeat. Sometimes you got to think, if you're chasing 180, 185, you can't win the game in the power play, but you might lose the game in the power play. We lost too many wickets in the power play, and then we couldn't have small partnerships, which we wanted to have for chasing 180, 185. But then that's part of the game. We learned it. We'll sit back and then come back stronger. To have that strangle on South Africa, 30 for 3, whatever they were, and then to sort of adopt a defensive bowling strategy. Again, I thought that was a missed trick. There's different ways to go about a chase. So even setting a score, and like I say, we've spoken about it a lot, but we haven't implemented it across the board, and I think that's cost us in some of the performances. Very disappointed in the performance, but when you set out to win a World Cup, don't expect someone to come deliver the World Cup to you on halfway through the competition. So we understand we've made a lot of mistakes tonight. We understand you probably allowed one mess up in this phase of the competition, and we've messed up on a grand scale, and now the onus is on this group of guys to turn around and put in two solid performances against Zimbabwe and West Indies. You allowed one mess up, Rika, is what the assistant coach there had to say. Like Boria saying, this should be that mess up and we should overcome and we should make it further into this World Cup. But I want to understand from you, and we're just going to play out some graphics to go with Rika to understand how India can overcome this. What are the scenarios before us right now? A lot also hinges, Rika, if I'm not mistaken, on South Africa winning all the rest of the matches at this point. That's right. India definitely has to look at winning the next two fixtures. The first one, of course, comes up against Zimbabwe on the 26th, and then the Eden Gardens fixture against West Indies on the 1st of March. So winning is non-negotiable. Now, if they lose, then it is very important to see that they at least win against the winner of the match tonight, which is against West Indies and Zimbabwe. All Indians will be having their eyes on that fixture in Mumbai tonight. So India has to win against the winner of tonight's match to be able to get into the semi-final. Now, if all the teams have 1-1 wins in this league stage, in this Super 8 stage, then it will come down to net run rate. And India's net run rate right now is minus 3.8, and that is going to hurt India. If it doesn't manage to win the other matches, it will really have to hinge on
other results going their way to be able to reach the semi-final. Okay. And I'm really surprised at this point. We are sitting here talking about India, whether they'll make it to the semi-final or not. My idea is that they'll still make it, having won the next two encounters, having corrected the mistakes. Look, Vedika, I must, tell our viewers at this moment, the big wins that they had ahead of the tournament, the big 200s they made, were on pitches that suited India's kind of play. The pitches that really suited batting, mauling the bowlers, basically. But ICC pitches are a little different. Indian cricket team knows it. They knew it well in advance, and they should have prepared for the fact that they will not be able to hit every bowler through the line, and have prepared accordingly. That did not happen. Last night, I would say, was a reality check for them. All right, I will have to leave it at that. I apologize because we have some breaking news coming in on a breaking ground. We're being told that India has issued an advisory amid the Iran-US tensions. India's advisory says leave Iran by available means of transport. Indian nationals in Iran advised to leave. All Indian citizens asked to exercise caution. The advisory is leave by available means of transport, avoid protests and demonstrations. That's the content of the advisory. Remember, thousands of Iranian students are demonstrating at universities in Tehran and across the country for a second day as they reopen a month after deadly nationwide protests. The Ministry of External Affairs now coming out with that advisory for Indians in Iran, asking them not only to exercise caution, but to leave by available means of transport and avoid protests and demonstrations. Remember, thousands were killed during the demonstrations, mostly on the nights of the 8th and 9th of January, during a state-imposed communications blackout, as the country had faced the threat of another war and still does with the US and Israel. Aditya now joining me live. Aditya, just bring us the contents of that advisory. Tell us more about the situation in Iran as we speak. Vedika, this is a fresh advisory issued by the Indian government. In fact, this is an advisory issued by the Indian embassy in Tehran. And this is at a time when the situation in the Middle East is volatile. There are US ships and, military forces that are moving close to Iran. And certainly there are threats that have come in from US President Donald Trump. This even as negotiations continue between Iran and United States. In a couple of days from now, we'll have negotiations taking place again in Oman. This will be the fourth round of negotiation. If I can read through the fresh advisory that has been issued, this is the third advisory this year. It says, in continuation of the advisory issued by the Government of India on 5th of Jan 2026, and in view of the evolving situation in Iran, Indian nationals who are currently in Iran, this includes students, pilgrims, business persons and tourists, are advised to leave Iran by available means of transport, including commercial flights. The 14th January 2026 advisory is hereby reiterated that all Indian citizens and PIOs should exercise due caution, avoid areas of protest and demonstration, stay in contact with the Indian embassy in Iran, and monitor local media for any developments. Now, Vedika, we've been monitoring and closely reporting on the developments in Iran. There have been major protests that have been underway. Although we had spoken to the Iranian envoy to New Delhi very recently, who held a press conference in Delhi as well, who exclusively had told NDTV that whatever protests were witnessed were led and provoked by US and Israel, and they fear no chance of any kind of change in the regime in Iran. Even though there's a fresh threat by US President Donald Trump very recently, just hours ago, who has said that if the negotiations do not fall in line with Iran, then certainly they have a military option that will be exercised, and that can also lead to the change in the regime. It's a fresh threat, it's a fresh provocation. Also comes at a time, Vedika, when just hours ago, the war cabinet of Israel has met and taken a review of the situation in Iran. This also takes place at a time when the Indian Prime Minister is about to visit Israel on Wednesday early morning for a 2-day visit amidst geopolitical tension in the region. Comes, like you said, at a time when Donald Trump himself has signaled a possible military escalation if those talks fail.
absolutely, there could be a military escalation. Although, while we have been analyzing the situation over the last many weeks, we do not think that there can be any major military action by US at this particular stage. There have been a lot of warnings coming in, but going by the US approach over the last year or so, they have been more inclined towards limited military options. That means some kind of a limited strike that does not provoke a kind of a regional conflict in the entire area. Earlier, there have been reports by the Israeli intelligence also that they do not believe that the kind of protests that are underway right now in Iran can lead to the regime falling or some kind of a change majorly in Iran. So as of now, the latest is that the Indian embassy has issued a warning and an advisory for the Indian nationals to leave Iran immediately. And certainly, we'll be tracking the latest in Iran. Aditya Raj called there, tracking all the developments taking place on the Iran story. Of course, you have that escalation claim by Donald Trump if talks don't go the way he wants to. But protests also continue inside Iran once again. All right, we're going to end with another top international story which has to do with Mexico's most powerful cartel leader who has been killed, after which Mexico has been on the edge. There's been massive violence, and you also have the US asking its people inside Mexico to stay safe at this moment. Mexico's army says it has killed Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, also known as El Mencho, leader of the powerful Jalisco New Generation cartel. The operation unfolded early Sunday in Tapalpa, about 2 hours southwest of Guadalajara in Jalisco. Troops came under heavy fire. 4 people were killed at the scene. 3 others, including Oseguera, were wounded and later died while being flown to Mexico City. Authorities seized armored vehicles, rocket launchers and high-powered weapons. 3 Mexican soldiers were also wounded. Officials say the cartel had trafficked massive quantities of fentanyl and other drugs into the US. In fact, El Mencho even had a $15 million US bounty on his head. But retaliation followed within hours of the raid. More than 10 vehicles were set ablaze in Puerto Vallarta. Roads were blocked in Guadalajara. Several OXXO stores were burnt or vandalized. Thick smoke rose over the tourist coastline. Jalisco activated a statewide code red. Schools were closed Monday. Public transportation was suspended. Mass events were cancelled. Air Canada suspended flights to Puerto Vallarta, citing security concerns. The Embassy of India, among others, in Mexico has now advised Indian nationals in Jalisco and several other affected states to shelter in place, avoid areas near security operations, minimize travel and stay in close contact with family. From Washington, the White House has issued a statement underlining that it shared crucial intelligence with Mexican agencies during the operation. Governor Pablo Lemus Navarro is urging residents to remain indoors as armed patrols continue across the state. Meanwhile, authorities are calling this the most significant blow yet against Mexico's most powerful cartel. Bureau Report, NDTV. Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola Signature, India's #1 camera phone. Grab Motorola Signature today. Vijay Deverakonda and his going-to-be wife Rashmika spotted at Udaipur. They were heading to their hotel where wedding ceremonies will take place. Heavy security in and around the area. Alright team, our new auto show is ready. Now we need a promo. Something cool, something sharp.
Well, I'm sure we'll be having outstanding reviews, solid suggestions. Expert advice. The latest trends. It's a lot simpler. We'll help people make the right auto decisions. It's got the cool stuff, geeky stuff, serious stuff, all of it, so that you can discover, decide and drive. I'm Siddharth Sharma and I am your Automate. From 1983 to now, I have seen cricket evolve, but the mindset to win never changed. I tell you that what win matches and what doesn't. This T20 World Cup, let's talk cricket, controversies and more on NDTV. लोग कहते हैं कि जिंदगी एक फिल्म की तरह होती है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बचपन से पता था मेरे सपनों में दम है, आगे नहीं सबसे आगे जाना है, स्टार नहीं सुपरस्टार बन के दिखाना है। नाम मिला, फेम मिला, प्यार मिला। I was not just running, I was flying. सबकी जुबां पे बस एक ही नाम, यो हनी सिंगर। लेकिन फिर ब्लॉकबस्टर कहानी में आया एक ट्विस्ट। 7वें आसमान से सीधा गिरा मैं जमीन पर। फिर क्या, खुद पे काम दोबारा शुरू। फैंस ने फिर प्यार दिखाया, फिर स्टार नहीं सुपरस्टार बनाया। है ना मेरी जिंदगी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। शुक्रिया आपकी प्रेयर्स का और आपके प्यार का। कॉन्सर्ट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, बट दिस इज गोना बी कॉन्सर्ट ऑफ अ लाइफटाइम, क्योंकि मेरे फैंस ही हैं मेरी विक्ट्री, मेरी हिस्ट्री, मेरी ग्लोरी। सो कम एंड विटनेस यो हनी सिंह, दिस इज माय स्टोरी। What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood. इनको यहाँ से जाना ही होगा। जय मां दुर्गा! There is no bigger battle in 2026. And nobody has reported Bengal like I have. Buckle up for an unforgettable election thriller. Will the BJP breach Mamta's fortress? TMC जावे, BJP आसपे। Can Didi fight off her life's biggest challenge? BJP double engine সরকার এই লড়াই বাঁচতে হবে। Battleground Bengal with Manogya Loiwal. Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Raut, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m. Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu, so many attacks, the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews. It's incredible. He has seen history break, live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting. Welcome to Left, Right and Center. Hard facts. War-struck country. Hard questions. In the Ukraine. 30 years of trust. In the Kargil area. North Ukraine. In France. In Italy. At Srinagar. Vishnu Shom for NDTV. Vishnu Shom. Only on NDTV.
He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only